Hello students, in this video lecture we deal with orthogonal matrices. Orthogonal matrices. Guys, these are very simple matrices to study. Okay. First of all, I will write a definition of a single line here. बहुत छोटी सी definition है. I square matrix. I square real matrix. One more thing here. I square real matrix is said to be orthogonal. Is said to be orthogonal if A into A dash means transpose, right? A into A dash or A dash into A, or you can write here T for transpose. If it is equals to identity, okay, then it is a orthogonal matrix, right? A square real matrix is said to be orthogonal if A and its transpose multiplication कैसे भी हो वो इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा. पहली बात बता दूं आपको, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की. द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स is again matrix itself, right? Okay, so guys, by using this definition we will study here some properties of orthogonal matrix. Okay, बहुत छोटी छोटी सी और मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. बहुत ही रिलैक्स माइंड से करना है ना. बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ रहे हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. नंबर 1, द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स of an orthogonal matrix is orthogonal. अगर ये चीज़ आपसे पूछे कि आप इसको प्रूव भी कर दो तो आपने 2 लाइनें प्रूव कर देना. इसको छोटा सा प्रूफ है, लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे ना. रिमेंबर, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं छोटी छोटी चीज़ें. ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. ओके, नाउ कंसिडर capital A be an orthogonal matrix. Be an orthogonal matrix, right? Then if it is orthogonal matrix, then A into and its transpose should be equals to identity, right? ये होना चाहिए भाई. अपने इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह दिया तो भैया ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. Now the question is that we need to show that the transpose of the given matrix is also orthogonal. That is, transpose of the matrix is this, and a transpose and transpose, it should be identity. We need to prove it. Okay, चलो ठीक है, करते हैं. Now this implies that transpose of the matrix and transpose of the transpose of this should be equals to identity. और आप एक छोटी सी बात ही कह सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बोथ दी साइड्स कर सकते हैं आप, क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी होता है ना. तो ये हो गया आपके पास
ए टी। एक और बता दूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी सिर्फ यही नहीं होता, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिंपल ए ही है, मैट्रिक्स ही आ जाएगा, बराबर आइडेंटिटी आ गया, क्योंकि आई का जो ट्रांसपोज होता है वो आई ही होता है ना। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो ये क्या, दिस इंप्लाइज दैट ए टी इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हो गया, लो हो गया प्रूव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर द सेकंड प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। Right, and to prove this, okay, to prove this हमें क्या करना है, एक छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी फिर से मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपने इन्वर्स का ट्रांसपोज किया तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक के ट्रांसपोज को अंदर ले लें, उसके इन्वर्स को बाहर ले लें। ये सिंपल सी चेंजेस हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। और आपने प्रूव करना है कि मैट्रिक्स के इन्वर्स का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल होता है, तो आपने प्रूव करना है ए इन्वर्स इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यह आपने प्रूव करना है ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रूफ इसका छोटा सा प्रूफ है। सिंस, पहले आप लिख लेते हैं, कंसिडर कैपिटल ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंपल सा काम जो हमने ऊपर किया वो बहुत सिंपल सा काम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन क्या होना चाहिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और बराबर में आप ये भी कर सकते हैं ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, अभी आपने प्रूव करना है कि ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ए, ये तो हमें पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। तो हम बता दें आपको कि ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों साइड का अगर हम इन्वर्स करेंगे, है ना, तो दोनों साइड का अगर हम इन्वर्स कर दें तो भी सेम बात होगी। ओके, इफ़ ए इक्वल्स टू बी एंड ए एंड बी आर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स, दोनों की इनवर्स ही बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकती है उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, जब वो दोनों मैट्रिक्स हर एस्पेक्ट से बराबर होंगे। ठीक है, नाउ हियर वी कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स। तो हम रिवर्स ला लगता है इसमें जब आप इसको खोलते हैं, ए ट्रांसपोज इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आई ही होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए माइनस वन का ट्रांसपोज इंटू ए माइनस वन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका कि ए इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो दीज आर द सिंपल प्रॉपर्टीज, सिंगल लाइन प्रॉपर्टी, सिंगल लाइन प्रूफ प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डील करनी है, हमारे पास एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर से एक थर्ड प्रॉपर्टीज़ मैं आपको फिर यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is again orthogonal, राइट। सो दो लाइन का प्रूफ यहाँ पे देखेंगे फिर से। ओके, कंसिडर
A and B, capital A and capital B, are two orthogonal matrices. Two orthogonal matrices. ठीक है? Then this implies that what? A into A transpose equals to identity, यानी कि A transpose into A. Okay, and second, B is also orthogonal, so B into B transpose is equals to identity, or B transpose into B, or combinedly you can write A into A transpose is equals to B into B transpose is equals to identity if A and B are two orthogonal matrices. So here we need to prove that their product, that is product of two matrices A into B, we need to prove it is also an orthogonal. So we need to prove A into B into A into B transpose should be equals to identity. We need to prove it. So let us start. Come on. Now this implies that A into B, to prove here, to prove A into B is orthogonal, we take A into B and A into B transpose. Then we can write it A into B. We will prove it equals to identity. Okay, and we can write here B ट्रांसपोज. रिवर्स लो लगता है भैया, है ना? मैं आपको बता दूं, ये आ जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. रिवर्स लो लगता है इसमें ना, ये रिवर्स हो जाता है इसका ऑर्डर जब आप ट्रांसपोज खोलते हैं इसका. सो यहाँ पे आप एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं. हेयर वी हैव यूज द रिवर्स लो, रिवर्स लो ऑफ द मैट्रिसेस. यहाँ पे आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. ए को बाहर निकाल लें, बी इंटू बी ट्रांसपोज को एक साथ ले लें और एक की ट्रांसपोज को बाहर निकाल दें. इधर भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से आप इसको कर सकते हैं. Right, here you can use the associative property. So here it is given that the B is the orthogonal matrix. So here by this virtue we can here write the identity I, because B is the orthogonal, B is orthogonal. Okay, we can write it here. So आइडेंटिटी के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा. सो A इंटू A ट्रांसपोज, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट A is the orthogonal matrix, so we can write here identity since A is orthogonal, and it is proved. Now what? A into B and A into B transpose is equals to identity, and this implies that A into B, then the product of two orthogonal matrix is orthogonal. Simple. So these are the simple manipulations and simple properties. Okay, one more thing, one last property I am going to discuss here, the smallest. It is also a small property. Now if A is an orthogonal matrix, if capital A is an orthogonal matrix, then determinant of the matrix should be very clear, either it is plus 1 or minus 1. The determinant of the orthogonal matrix should be either plus 1 or minus 1. So to prove it, हम बहुत आसानी से दो लाइन में इसको देखेंगे, है ना. कंसिडर कैपिटल A is an orthogonal matrix, right? Then A into A transpose should be equals to identity, and take the determinant of both this side. A into A transpose is equals to identity determinant, and you know determinant जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके ऊपर.
ठीक है, और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट आता है 1। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट विल बी सम वैल्यू। और मैं आपको बता दूं एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। सो अगर कैपिटल ए का डिटरमिनेंट स्मॉल ए है तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी स्मॉल ए ही होगा, इक्वल्स टू 1। दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, क्या आपने ए का डिटरमिनेंट ए माना था, वो आ गया क्या, प्लस माइनस 1। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है गाइस, है ना। आप बेसिक जो मेथड्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है आपकी मैट्रिसेस के ऊपर, उसको लगा के आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर हम 1 से 2 क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ। एंड द क्वेश्चन इज हियर, prove that the following matrix is orthogonal. And the part A is prove that the following matrix is orthogonal. And what is the matrix? Matrix is 1 by 3, 1 2 2 2 1 minus 2 2 minus 2 and 1. We need to prove it orthogonal. Okay, so भैया बहुत आसान सा solution है. We need to prove this orthogonal. Consider the given matrix. Consider capital A. Capital A equals to 1 by 3, 1 2 2 2 1 minus 2 2 minus 2 and 1. Now we need to prove it's orthogonal, so we will prove A into A transpose is equals to identity, right? So here we need to find for the given matrix A into A transpose, right? So what about the matrix, what about the A? A is 1 by 3, 1 2 2 2 1 minus 2 and 2 minus 2 1. Let me check it again. 1 2 2 2 1 minus 2 2 minus 2 1. Okay, and the transpose will be 1 by 3, and the row will change into the column 1 2 2 1 2 2. Second row, the second column 2 1 minus 2, and the third row will be the third column 2 minus 2 and 1. Okay, so resultant 1 by 9 will be written here. Okay, now the first row multiply by first column, it will be 1 4 4 9, right? फिर second first row and the second column, so it will be 2 and plus 2 2 plus 2 and minus 4, and the first row and the third column, so it will be 2 minus 4 plus 2 2 minus 4 plus 2, right? Second row, the first column, it will be 2 plus 2 minus 4 2 plus 2 minus 4. Then second row, second column, 2 plus 1 and plus 4 2 plus 1 and plus 4, right? Then second row and the third column, 4 minus 2, second row and third column, 4 minus 2 and minus 2, 4 minus 2 and minus 2. Then the third row and the first column, 2 minus 4 and plus 2, 2 minus 4 and plus 2. Then the third row and the second column, 4 minus 2 and minus 2, 4 minus 2 and minus 2. Then the third row and the third column, 4 plus 4 and plus 1, 4 plus 4 and plus 1. Now what about the resultant? That is 1 by 9. It is 9 and it is 0, then it is 0 and it is 0, then 9, then 0, then 0, then 0, then 9. So you can take 9 outside from the complete matrix. So you will get here 1 0 0
0, 1, 0, 0, 0, 1. So 9 is cancelled out by 9, and which is nothing but the identity matrix. So here we have proved A into A transpose is equals to identity. So this implies that the given matrix A is orthogonal. बस इतना सा काम करना है यार, बहुत बड़ा काम इसमें नहीं करना है ना, ये छोटा छोटा सा काम करना है, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया है ना। इसी में क्वेश्चन हम छोटा सा और ले लेते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं उसी का पार्ट बी भी दिया हुआ है, और इसमें क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, find the values of A, B, C if the matrix which is the matrix, if the matrix A is equals to 0 to B, C, A, B minus C and A minus B, C is orthogonal, is orthogonal। ये भैया बहुत सिंपल सा काम करना है, सॉल्यूशन भी इसका ए बी सी की किस वैल्यूज़ को, मतलब ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है ना, इज ऑर्थोगोनल। तो हम इसको ऑर्थोगोनल मान के चल लेते हैं। कंसिडर द गिवन मैट्रिक्स capital A is orthogonal, then A into A transpose is equals to identity, ठीक है। Now this implies that what about the A, 0 to B, C, A, B minus C, A minus B and C. And now what about its transpose? Transpose will be, first row will be the first column, that is 0, 2b and c. Second row will be the second column, ab minus c. Third row will be the third column, that is a minus b and c. It is the, now simple multiply all this, first row and the first column 0, 4b square plus c square. Okay, then first row and the third column, then first row and the second column, so it will be 2b square minus c square, right? Then first row and the third column, 2ab let me check, minus 2b square, sorry, minus 2b square minus 2b square and then plus c square, right? Similarly, first row and the first column, so it will be 2b square minus c square, 2b square minus c square, and the first row and the second column, a square b square plus c square, a square b square plus c square. Similarly, so by this process I am going to write the simply a square minus b square minus c square. Similarly, this will be 2b square plus c square, and it will be a square minus b square minus c square, and it will be a square plus b square plus c square, and it should equals to the identity 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, so guys, here with the properties of the matrices, two equal matrices, here you can write their relations, and these relations can be written in the form
let me find it, come on, that is for 2b square minus c square is equals to 0. Either you can see here, that is for b square plus c square is equals to 1, and a square plus b square plus c square is also 1, and a square minus b square minus a square plus b square plus c square is 1, right, on the diagonal. ठीक है, ओके, थर्ड में लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सेम ही एलिमेंट है. सिमिलरली यू कैन राइट हियर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके, चलिए अब यहाँ से आप रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ b here? So you can write the different values of b. You can solve in terms of b. So 4b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फर्स्ट मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार मैं अपना मैट्रिक्स चेक कर लूँ. 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माई फर्स्ट एलिमेंट, एंड 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेरी गुड. 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड दिस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाउ इट्स गुड. सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर हो गया आपके पास, राइट. और इस तरीके से इस इक्वेशंस को आप ऊपर रख देंगे, किसी इस इक्वेशन में रख दो आप, है ना. तो 4b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपका. तो यहाँ से 6b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया आपका. b इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 6. ये आपकी वैल्यू आ गई, किसकी, b की वैल्यू आ गई. अब ये b की वैल्यू आ गई तो आप इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3. तो आप इसे इस इक्वेशन में रख दें, इस वाली इक्वेशन में रख लो आप इसको. a स्क्वायर प्लस b की जगह रख लो प्लस माइनस, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर, एंड c की जगह रख लेता हूँ प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का, यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 1. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 6 एंड प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. तो इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 ऑन सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. So here a equals to plus minus 1 upon square root 2 and b is equals to plus minus 1 upon square root 6 and c is equals to plus minus square root 3. So for these values of a, b, c, the given matrix A is equals to this will be the orthogonal. So guys, there are number of such questions you can try yourself. I will give you the assignment. So as I have told you in the last video that for receive the notifications or to receive the other videos, guys, you have to subscribe, like, comment, share the videos and press the bell icon also. One more thing to be requested here, that suggest the topic whatever you want to learn, okay, in the comment box. I will give you a reply. Thank you very much.